Hello everyone. In previous class, we discussed about the transient, subtransient and steady state reactance of the synchronous motor like xt, xq, xt dash, xq dash, xd double dash and xq double dash. We also discussed about the single phase synchronous motor. In this lecture, we will study about the stepper motor. What is it? Actually, हम इसमें स्टेपर मोटर का पूरा स्टडी करेंगे कि स्टेपर मोटर क्या होती है, उसका स्टेपर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो भी हम देखेंगे, कैसे स्टेपर मोटर जो है वो वर्क करती है या काम करती है. After this, we will move the next topic, स्टेपर मोटर टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन. मीन्स कितने टाइप्स की हमारी जो है स्टेपर मोटर होती है और कैसे वो स्टेपर मोटर ऑपरेट होती है. Next topic is the advantages and disadvantages of the stepper motor, and finally the references of this presentation. So in this lecture we cover about the stepper motor. Stepper motor के बारे में हम पूरा कवर करेंगे इस लेक्चर में कि स्टेपर मोटर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, टाइप और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एज वेल एज advantages, disadvantages and the applications of the stepper motor. So let's start with topic 1, introduction of the stepper motor. So the first question is that what is stepper motor? पहला क्वेश्चन यही आता है किसी भी टॉपिक को अगर हम देखें कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है. तो स्टेपर मोटर इस तरीके से आपको फिजिकली जो है वो मार्केट में कई सारे डिफरेंट साइज में आपको मिलेगी. चलिए देखते हैं स्टेपर मोटर क्या होती है. सो स्टेपर मोटर इज अ ब्रशलेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाइड टू देयर excitation winding into precisely defined step by step mechanical shaft rotation. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एक ब्रशलेस टाइप की जो होती है वो मोटर होती है जो कि करती क्या है, उसको हम ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं, उसको वो कन्वर्ट करता है स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन में. स्टेप बाय स्टेप चूंकि ये इसका जो रोटर है वो रोटेट होता है स्टेप बाय स्टेप, सो दिस इज कॉल्ड द स्टेपर मोटर. The shaft of the motor rotate through a fixed angle for each discrete pulse. इसमें हम पर्टिकुलर एंगल पे जो है वो रोटर के स्टेप्स को रोटेट करा सकते हैं, लाइक 30 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्रीज. तो इस तरीके से हम जो है स्टेप एंगल निकाल सकते हैं. स्टेप एंगल का फॉर्मूला होता है, स्टेप एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से. तो वो अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे कैसे हम स्टेप एंगल निकाल सकते हैं. दिस रोटेशन कैन बी लीनियर और एंगुलर. तो रोटेशन जो है वो हमारा लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है. इट गेट्स वन स्टेप मूवमेंट फॉर अ सिंगल पल्स इनपुट. और एक पल्स इनपुट में जो मोटर है वो एक स्टेप मूवमेंट करती है. सो दिस इज द स्टेपर मोटर.
If the step angle is smaller, the greater will be the number of steps per revolution and higher will be the accuracy of position obtained. तो अगर हमारा एंगल जो है स्टेप एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टेप एंगल हम निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय m इंटू एन आर, या हम बोल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेसेस इंटू नंबर ऑफ रोटर टीथ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर नंबर ऑफ फेसेस 3 फेस हैं तो m की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, और एन आर जो है हमारा रोटर टीथ है, अगर हमारे पास रोटर टीथ 4 है तो हमारा हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 3 into 4, so 360 divided by 12, so we get 30 डिग्री. तो हमारा स्टेप एंगल जो हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. स्टेप एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से. फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेसेस इनटू नंबर ऑफ रोटर टीथ. इस वाले फॉर्मूले से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं जिसपे कि हमारी स्टेपर मोटर जो है वो वर्क करेगी. So the step angle can be larger as 90 degree and as smaller as 0.72 degree. However, the commonly used step angle are 1.8 degree, 2.5 degree, 7.5 degree and 15 degrees. तो कॉमनली जो स्टेपर मोटर्स का जो स्टेप एंगल होता है 1.8 और 2.5 डिग्री होता है, जो कि हमें एक प्रिसाइज पोजीशन कंट्रोल प्रोवाइड कराता है. The next topic is the stepper motor working principle. So this is the cross-sectional diagram of the stepper motor. Stepper motor में एक्चुअली हम करते क्या है, स्टेप बाय स्टेप. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो फेस है ए डैश, ये हमारा मान लो पहला फेस हो गया, ये बी डैश दूसरा फेस हो गया, ये सी डैश हमारे पास तीसरा फेस अगर हो गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक फेस को हम एक्साइटेड करेंगे जिससे कि रोटर जो है वो हमारा उस फेस के साइड जो है वो मूव होगा एक स्टेप में. ठीक है, जैसे अभी हमने स्टेप निकाला, इसमें कितने स्टेप में मूव होगा, जो कि हमारे रोटर पे 1 2 3 4 टीथ है, नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास 3 है, तो हमारा स्टेप एंगल आ जाएगा 30 डिग्री. तो हमारा जो रोटर का स्टेप होगा वो 30 डिग्री पे हमारा रोटर जो है वो मूव करेगा. पहले यहाँ, फिर 30 डिग्री पे यहाँ, फिर 30 डिग्री पे यहाँ, फिर 30 डिग्री पे यहाँ. तो इस तरीके से हम फेस ए को एक्साइट करेंगे, तो रोटर ए के जैसे ही सामने आएगा हम ए को अनएक्साइटेड करके बी को एक्साइटेड कर देंगे, तो रोटर जो है वो अब ए फेस से बी की ओर मूव करेगा. जैसे ही बी के पास आएगा तो हम बी को अनएनर्जाइज करके सी को एनर्जाइज कर देंगे, तो अब जो है वो रोटर सी की साइड मूव करेगा. ऐसे ही अगर हम सीक्वेंसिंग में फेस को स्विचिंग करते जाएंगे, है ना, और फेस को हम अप्लाइड करते जाएंगे, तो हमारा रोटर प्रॉपर स्टेपिंग में रोटेट करेगा. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेपर मोटर. As all with electric motors, stepper motor have a stationary part known as stator and moving part known as the rotor. On the stator, there are the teeth on which the coils are wired, while the rotor is either a permanent magnet or a variable reluctance iron core. We will dive deeper into the different rotor structure. Figure 1 show the drawing representation. The section of the motor is shown where the rotor is a variable reluctance iron core. Variable reluctance rotor एक्चुअली में क्या होता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टीथ और नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं, या हम बोले सैलिएंट पोल टाइप का कंस्ट्रक्शन अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो रिलक्टेंस है वो वेरी होता है.
क्यों होता है? बिकॉज द एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर हमारा वेरी होता है, इसलिए हम इस टाइप के रोटर कंस्ट्रक्शन को या टीथर जो कंस्ट्रक्शन होता है इसको हम वेरिएबल रिलक्टेंस रोटर बोलते हैं। The basic working principle of the stepper motor is following: by energizing one or more of the stator phases, a magnetic field is generated by the current flowing in the coil and the rotor aligned with this field. By supplying different phases in sequence, the rotor can be rotated by a specific amount to reach the desired final position. Figure 2 show the representation of working principle of stepper motor. ये देखिए, पहले हमने A और A डैश को एनर्जाइज किया है, तो रोटर हमारा जो है वो अलाइन हो जाएगा A डैश के साइड। जैसे ही होगा अब हम B फेज को एनर्जाइज कर लेंगे, तो अब हमारा रोटर जो है B फेज की साइड मूव होगा। जैसे ही वो B फेज की साइड मूव होगा, हम B को डी एनर्जाइज करके अब हम C फेज को एनर्जाइज कर लेंगे, तो रोटर जो है वो अब हमारा C फेज के साथ या C फेज के रिस्पेक्ट में अलाइन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पर्टिकुलर फेज का सीक्वेंसिंग फॉलो करते हैं और हमारा रोटर स्टेप बाय स्टेप में मूव करता है। इस केस में जो हमारा स्टेप एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। The next topic is a stepper motor type and its construction. The performance of a stepper motor, both in terms of resolution or step size, speed and torque, is influenced by the construction detail, which at the same time may also affect how the motor can be controlled. As a matter of fact, not all stepper motors have the same internal structure or construction, as there are different rotor and stator configurations. So, stepper motor consists of three main parts. First one is called the rotor, another is called the stator, and third one is called the air gap between stator and rotor. So, rotor is the rotating part of the machine. For the stepper motor, there are basically three types of the rotor, or we can say that on the basis of rotor construction, the stepper motor are classified into three categories. First one is called the permanent magnet rotor, or machine is called the permanent magnet stepper motor. Second is a variable reluctance stepper motor, and third one is a hybrid stepper motor. So hybrid stepper motor is the combination of permanent magnet and variable reluctance rotor. हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं? परमानेंट मैग्नेट रोटर और वेरिएबल रिलक्टेंस रोटर के कॉम्बिनेशन से जो हम मोटर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन जो स्टेपर मोटर है वो थ्री टाइप्स की होती है: परमानेंट मैग्नेट, वेरिएबल रिलक्टेंस एंड हाइब्रिड स्टेपर मोटर। चलिए इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी परमानेंट मैग्नेट रोटर। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो हम रोटर यूज करेंगे वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का रोटर यूज करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम फॉर परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। इसमें आप देख पा रहे हैं जो रोटर हमने यूज किया है ये रोटर परमानेंट मैग्नेट का है। इसमें जो पोल रहेंगे वो फिक्स्ड रहेंगे। So the rotor is a permanent magnet that aligns with the magnetic field generated by the stator circuit. अब स्टेटर सर्किट में क्या करेंगे, हम सप्लाई देके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे जिससे कि जो रोटर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्टेटर के पोल्स के साथ अलाइन होने के लिए ट्राई करेगा और रोटेट करना स्टार्ट करेगा। दिस सॉल्यूशन guarantee a good torque and also a retent torque. This means the rotor will resist, even if not very strongly, to a change of position regardless of whether a coil is energized.
तो परमानेंट मैग्नेट रोटर का जो मोटर है उसमें बहुत ही सिंपल उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। सेम टू सेम हम एक एक फेस को एक्साइटेड करते जाएंगे और एनर्जाइज करते जाएंगे, तो रोटर जो है वो टूवर्ड्स फेस के साथ अलाइन होता जाएगा और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप रोटेट करेगा। The drawback of this solution is that it has a lower speed and lower resolution compared to the other types motor. Figure 3 show the representation of a section of a permanent magnet stepper motor. तो ये जो है ये डायग्राम अभी हमने देखा, दिस इज द डायग्राम फॉर परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो इसमें हम परमानेंट मैग्नेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रोटर यूज होता है वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का रोटर यूज होता है। सो दिस इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। The next is a variable reluctance stepper motor. Why it is called variable reluctance stepper motor? Because in this motor the rotor is variable reluctance type construction. Means जो रोटर है वो टीथन फॉर्म में होता है, तो जहां पे टीथ होते हैं वहां पे एयर गैप कम होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, और जब स्लॉट वाला हिस्सा आता है या खाली हिस्सा आता है उस जगह पे जो है वो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप जो है वो ज्यादा हो जाता है। मींस वेरिएबल रिलक्टेंस रोटर क्या कराता है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप प्रोवाइड करता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो जब हमारा एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वहां पे रिलक्टेंस भी वेरी करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस रोटर। The rotor is made of an iron core and has a specific shape that allow it to align with the magnetic field. Figure 1 and figure 2, we can see that. With this solution, it is easier to reach a higher speed and resolution. But the torque it develops is often lower and it has no detent torque. इसमें डिटेंट टॉर्क जो होता है वो जीरो होता है, मतलब वैल्यू इसमें हमें डिटेंट टॉर्क की नहीं मिलती, और इसमें जो टॉर्क डेवलप होता है वो कम होता है कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट मोटर। So this is the diagram how the variable reluctance stepper motor work. डायग्राम ए में हमने क्या किया है, फेस ए और ए डैश को एक्साइट किया है। अभी मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने देखा कि पहले हम ए और ए फेस को एक्साइट करेंगे तो जो रोटर है हमारा वो अलाइन हो जाएगा ए फेस के साथ। जैसे ही अलाइन होगा हम ए फेस को डी एनर्जाइज करके बी फेस को एनर्जाइज कर देंगे, तो रोटर जो हमारा मूव करेगा वो बी फेस के साथ मूव कर जाएगा और अलाइन हो जाएगा। और जैसे ही रोटर बी फेस पे आता है हम बी को डी एनर्जाइज करके सी को एनर्जाइज कर देंगे, तो रोटर जो है वो अलाइन हो जाएगा टुवर्ड्स सी फेज। और इसी तरीके से हम प्रॉपर सीक्वेंसिंग में फेज को एनर्जाइज करके रोटर को प्रॉपर स्टेपिंग में हम रोटेट कराते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। Third one is a hybrid rotor, or we can say that the hybrid stepper motor. So in this stepper motor, the rotor is hybrid type. What is the meaning of hybrid? Hybrid means combination of two things. तो इस वाले केस में combination of permanent magnet rotor और variable reluctance rotor को हम बोलते हैं hybrid rotor। मतलब हमारा रोटर जो रहेगा वो परमानेंट मैग्नेट का तो रहेगा, साथ में उसमें जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा वो वेरिएबल रिलक्टेंस स्ट्रक्चर में होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड रोटर और द मोटर इज नोन एज हाइब्रिड स्टेपर मोटर। This kind of the rotor has a specific construction and is a hybrid between the permanent magnet and variable reluctance version. The rotor has two caps with alternating teeth and is magnetizing axially.
This configuration allows the motor to have the advantages of both the permanent magnet and variable reluctance version, especially or specifically high resolution, speed and torque. This higher performance require a more complex construction and therefore a higher cost. मीन्स जो हमारी हाइब्रिड मोटर है उसकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर स्टेपर मोटर, बट ये हमें हाई स्पीड और हाई रेजोल्यूशन जो है एज वेल एज दी हायर टॉर्क प्रोवाइड करती है. The real motors have a more complex structure with a higher number of teeth than the one shown in a picture. So the working principle of the stepper motor is the same. The high number of the teeth allow the motor to achieve a small step size down to 0.9 degree. So this is the diagram of the hybrid stepper motor. It is the combination of permanent magnet rotor or variable reluctance rotor. Next part is a stator. Stator is a stationary part of the motor, or the stator is the part of the motor responsible for creating the magnetic field with which the rotor is going to align. The main characteristics of the stator circuit include its number of phases and pole pair as well as the bar configurations. The number of phases is the number of independent coils, while the number of poles pair indicate how main pairs of the teeth are occupied by each phases. Two-phase stepper motors are the most commonly used, while three-phase and five-phase motors are less common. So figure 5 and 6. This is the two-phase stepper motor, phase A and phase B, and this is the three-phase stator. So diagram A, the two-phase single pole pair stator and two-phase dipole pair stator in right side. The latter show the magnetic field generated when the positive voltage is applied between the A plus and A minus. So the next topic is the advantages and disadvantages of the stepper motor. Now that we understand the working principles of stepper motors, it is useful to summarize their pros and cons compared to the other motor types. So the advantages of stepper motor: due to their internal structure, the stepper motor do not require a sensor to detect the motor position. Since the motor moves by performing steps, by simplifying counting these steps, you can obtain the motor position at the given time.
In addition, the stepper motor control is pretty simple. The motor does need a driver but does not need complex calculation or tuning to work properly. In general, the control effort is lower compared to the other motors. With microstepping, you can reach high position accuracy up to approximately 0.007 degree. Number next, stepper motor offer good torque at low speeds, are great for holding position and also tends to have a long lifespan. Next one is the disadvantages or drawbacks of stepper motor. They can miss a step if the load torque is too high. This negatively impacts the control since there is no way to know the real position of the motor. Using microstepping makes the stepper motor even more likely to experience this issue. मतलब जब हम माइक्रोस्टेपिंग कंट्रोलिंग करेंगे उस कंडीशन में अगर हमारा लोड टॉर्क बढ़ जाता है तो हम प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअल रोटर की पोजीशन किस जगह पर है. सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक्स. These motors always drain maximum current even when still, which makes efficiency worse and can cause overheating. Now, the uses and the application of stepper motor in different areas. Due to their properties, stepper motors are used in many applications where a simple position control and the ability to hold a position are needed, including number 1. It is used in printers like print heads, paper feed and scan bar. It is also used the X-by table drives or media drives used in 3D printer. Stepper motor are widely used in robotics, arm control and effectors. It is also used in DSLR camera like aperture oblique focus regulation. It is also used in videos cameras like pan, tilt, zoom and focus. And it is also used in ADM machine like bill movement and tray elevators. So these are some application and uses of the stepper motor. So these are the references.
and thank you for watching this video.